Hello everyone. In this lecture, we will learn about Python lists. What are Python lists? How we can use these lists to manipulate data? How these lists are different from arrays of C++ and Java. So lists are actually data structures in Python. So data structures mean these are the data containers that contain different uh, types of data. For example, we can define here a list like a variable name is equal to some comma separated values. So simply if we again define list, we can say that list is a data structure that contains comma separated values. So if we want to see the element of the list, we can simply print the list one element. So you can see here all the values of the list are on the screen. So लिस्ट के ऊपर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं. पर्पस क्या है लिस्ट का? डेफिनेटली इट कंटेन्स डाटा and data of different types. For example, 11, 44, 55, these are all the integer values, and we can also store a string value or character value in the list, in the same list. So that's why lists, Python lists are different from arrays of C++ and Java. Because in arrays you have to define the data type of the array. In list you do not need to define the data type of the list. So you just put the name of the list and you can store whatever kind of data you need. Second difference is that in arrays you have to define the size of the array, but in list you cannot need to define the size of the array. Size means how many elements will a list can contain. So you can increase the size as you have multiple values. So simply we save this script and we can run. You can see here all the elements with different data types presenting in the same list. So different types of data same list में contain कर सकता है. लिस्ट की साइज और उसकी डाटा टाइप को एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसको डिक्लेयर करे. So this is the way we simply can access the element of list. Different data elements को हम store कर सकते हैं, और ये elements actually when you develop a software you will see your list is actually contain all the objects from your database tables. जो database के table होते हैं जब हम उनको access करते हैं किसी application में, that actually आपकी query execute होती है, that will return you data and you put that data into an array or list so that simply a list can be used to manipulate that data. उस data के ऊपर कोई operation perform करने, कोई भी उस पर रेगुलर एक्सप्रेशन परफॉर्म करना है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने, क्योंकि आपके पास डाटा अवेलेबल हो गया लिस्ट के अंदर, आपने उसको पिक कर लिए, गेट कर लिया डेटाबेस से, सो यू कैन परफॉर्म एनी फंक्शन ऑन दीज वैल्यूज़. सेकेंडली यू कैन एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट सिमिलरली एज अरेज. जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो ज़ीरो होता है, वो ज़ीरो से इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है. वी प्रिंट ओनली फर्स्ट इंडेक्स. We can see that it will print only 11 value. So similarly, as arrays has different built-in functions, जो उसके different built-in functions हैं, और उन functions को use किया जाता है different purposes के लिए. For example, data को sort करना है, built-in functions होते हैं data को sort करने के लिए. इसी तरह डाटा के अंदर मज़ीद values को append करनी है. For example, this is the complete list. इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आउटपुट में आप लोगों को नज़र आ सके. लिस्ट वन, तो लिस्ट नाम नहीं रख सकते. लिस्ट वन इसलिए रखा है वेरिएबल का नेम, क्योंकि जो कीवर्ड है हम उसको वी कैन नॉट यूज़ एज अ वेरिएबल नेम. सो वेरिएबल नेम शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अ कीवर्ड. सो if we want to add a new element in the list आपके पास है, we can simply use a built-in function which is called append. append कर सकते हैं, और append करने के बाद हम कोई भी value
फॉर एग्जांपल हम कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, दैट वैल्यू कुड बी एनी ऑफ एनी टाइप. So if we execute this code, you can see oh, actually it will print as none because this is an error. There is nothing to print over here. तो हम यहाँ पे जस्ट अपेंड कर रहे हैं, तो हम दोबारा प्रिंट करवाते हैं लिस्ट को. सो हेयर वी कैन सी के वो एक वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. इसी तरह किसी भी टाइप की वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. आप देख सकते हैं उसको ऐड कर रहे हैं, बट द रीज़न इज़ कि हम उसको सेव नहीं कर रहे. और सेव मतलब हम उसको किसी डिफरेंट किसी और वेरिएबल में नहीं सेव कर रहे. तो जो हमारी एक्चुअल वाली स्ट्रिंग है, जो एक्चुअल वाली लिस्ट है हमारे पास, दैट वुड बी अपडेटेड. जो एक्चुअल डाटा है हमारा वो क्या होगा, वो अपडेट हो जाएगा. तो इसके लिए हम कोई डिफरेंट लिस्ट नहीं यूज़ कर रहे, अपनी एक्चुअल लिस्ट को क्या करी जा रहे हैं, उसी को ही अपडेट करी जा रहे हैं. इस तरह हम डिफरेंट और कोई वैल्यू ऐड करके देखते हैं. सो व्हाट हैपन कि उसको अपेंड कर रहा है लास्ट में, क्योंकि एक्चुअल जो हमारे पास लिस्ट है उसके अंदर जो लास्ट वैल्यू अपेंड की है वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम उसको सेव नहीं कर रहे. जब तक उसको हम सेव नहीं करेंगे वो वैल्यू कंटेन नहीं करेगा. So we have learned how to append a value, so we can append different values to the same list. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ओल्ड वैल्यूज़ हैं और ये न्यू वैल्यू हमने 100 जो है वो क्या किया है, उसको अपेंड किया है. बट अपेंड फंक्शन इज़ वर्किंग लाइक स्टैक इन C++. स्टैक में भी जब आप कोई पुश करते हैं वैल्यू, तो वो क्या होती है, वो पुश वैल्यू एक्चुअली स्टोर्ड एट द एंड ऑफ द अरे. एट द एंड ऑफ द अरे एक न्यू इंडेक्स क्रिएट होता है, वो वैल्यू वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है. और सिमिलरली अपेंड जो है वो लिस्ट के अंदर एक वैल्यू को क्या कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द लिस्ट उसको अपेंड कर रहा है, उसको पुश कर रहा है. और इसको हम पॉप भी कर सकते हैं. सिंपली आप पॉप फंक्शन वी कैन यूज़ लिस्ट वन डॉट पॉप, so 100. Oh sorry, in pop we have to give the index of the value, so that 100 must be have index value 4. So when we execute it, just appending a 100 value, and in next step it just pop that value out of the list. So we can change the index. In case I like to remove the string value, so what will happen, that it will definitely remove that or pop that value easily. So we can remove the values. We can also use a del function to remove the values. And if we want to append a value, to add a value, we can easily append these values. So programmer according to the different problem statements वो values को add भी कर सकता है और remove भी कर सकता है.
मल्टीपल वैल्यूज़ को अपेंड करके देखते हैं. फॉर एग्जांपल we have 101, 102, 4. So let's see what's happened. So it will append definitely all these values to the given list. So to append or to add different values to the existing list, we have a different function which is called insert. So we can use index. You can see here your compiler is actually helping you to how to code, showing us that insert function is actually used two parameters. Insert जो एक built in function है, it must have two parameters. एक तो index आपने देना है और दूसरा वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो भी इंटीजर ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, दैट यू वांट टू पुट इनटू द लिस्ट, आप उसको इजीली लिस्ट में पुट कर सकते हैं. तो आप इंडेक्स देंगे कि किस इंडेक्स पे जो है वो आप कोई ऑब्जेक्ट पुट करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गिविंग इंडेक्स 4 और सेकंड आर्गुमेंट आप देना चाहते हैं कोई भी वैल्यू लाइक KFUEIT. सो how it will work, it will put that value over fourth index. So we can see that in the output. So we can also change the index of insert function. If you want to put that value on 0 index, then see what happen. उस KFUEIT की वैल्यू को उठा के 0 इंडेक्स पे ला रहा है. तो व्हाट डज इट मीन कि हम वो बाकी के तमाम एलिमेंट्स को डेफिनेटली उनकी इंडेक्सिंग में 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं. तो 11 जो कि 0 इंडेक्स पे था, दैट हैज़ बीन मूव फ्रॉम 0 इंडेक्स टू 1 index definitely. So this is the simple method of insert to insert a value, and similarly we can remove values from list as well. Like we pop the values, we can permanently remove some values. Like if you want to remove a string value, so you can see here our list only showing 3 values. It has been removed, a string value has been removed from the list. Similarly, if we want to clear all the values, simply we have a built-in function which is called clear. So if we called a clear function, it will definitely clear all the elements of a given list. Object has no attribute clear. Maybe in this version of the Python, this function works with a different name. So, but a clear function is actually used to clear all the elements of a list. So similarly, we have to see some other functions over the list. We have to define a different list, like we have all the elements belong to same data type. Like we have a list which name colors. In that list we can define different colors like red, white, and to that blue. So this is a list that actually has values that belong to same data type, which is string. So similarly, जिस तरह हम string में देखते हैं कि string को हम slice कर सकते हैं. We can access slice of a string, so we can slice a list as well. So similarly, we can use list name
And if we want to see, for example, from 0 index to 2 index elements of the list, so we can easily see only index from 0 to 2 index. If we print this statement, then we can see that from 0 to 2, what does it mean? This upper limit, which is 2, will always work as upper limit minus 1. So which is equal to 1. So 0 to 1, there are only two elements. The red has index 0 and white has index 1. Similarly, if we do not define any range, we only use colon here in the square brackets. So what will it will print all the elements, because we do not have mentioned any you can see any range in this domain. So it will show all the elements. If you want to see the index of an element, so you can see that easily. For example, you want to see the index of red element, so it will return you the index of that element, which is 0. If there are there are redundancy in the data, it means we have same values in with multiple times. We have red with multiple times, and we can say we have blue multiple times. So we can easily count these values by simply using a built-in function count. So count function will actually count the red value, how many times red exists in our list. So it will return us 2. So definitely, for example, if we want to see white and next we want to see blue, so it will show us that red is occurring 2 times and white has a frequency of just 1, it occurring 1 time, and blue is available for 2 times. So such kind of counting is very helpful when we use textual data and we are analyzing textual data, and we are through that analysis we need to find out any keyword is actually existing, how many times it is existing. Actually the frequency of a keyword in a textual data we can easily find out with a single built-in function, which is count. There are some other functions like we can sort a string as a list as well, but in that case we have a list of strings. So if we have integer values, we can sort the values easily, but even if we want to sort string values, we can sort them as well. So here you can see that in output blue, actually how to sort a string values, it will definitely sort alphabetically. So we can see that alphabetically all the words, all the strings have been sorted. We can perform sorting, we can also use some other built-in function as well that directly perform over the integer values, like if we want to use maximum function, so this is a built-in function and it will return us maximum value. For example,
So what it is actually returning us, it is returning us the maximum value. So max function is a built-in function that contains a list of integers. So it automatically, what it will return us, it will return us the maximum value. Similarly, we can find out mean value as well. So you can see here 11 is the mean value. So these are the some basic operations we can perform over the list. We have seen that we can append a new element to the list, we can delete an element, we can add different types of data elements into a list. It could be integer, it could be character or string values, and perform some basic operations. I hope you understand. If you have any query, you can ask me anytime. Thank you so much.